Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Kem Cho. Welcome back to my YouTube channel, The Insight Generator. Power up your data insight. So, guys, I'm just right back with the another videos, and in this video, I'm going to show you one of the features how it works actually called conditional column in Power Query. So, what is conditional column? Why it is created by the users? We will understand one by one, right? So, before that, I would like to request every one of my viewers who is currently watching this videos, guys, please support me, like, share, and do subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that if I update any videos, you guys are not going to miss any updates because I am doing this for you only, right? Completely free of cost. So what is conditional column? Let's just go to understand this. गाइस कंडीशनल कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जो एक यूजर क्रिएट करता है, यानी आप क्रिएट करते हो बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया और एनी कंडीशंस. कंडीशंस कैन बी एनीथिंग बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट्स और नीड्स एज पर द बिजनेस, राइट? सो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले हमें पावर क्वेरी एडिटर में जाना होगा. सो लेट्स गो टू द पावर क्वेरी एडिटर. एंड यू नो पावर क्वेरी एडिटर एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है जहाँ पे आप डेटा की क्लीनिंग शेपिंग करते हो, राइट? सो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बहुत सारे टेबल एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, बट मैं यहाँ पे कस्टमर्स टेबल को फॉर द एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कंडीशनल कॉलम. सो इस कस्टमर टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, लाइक कस्टमर की है, प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, एंड सो ऑन. सो लाइकवाइज वी आल्सो हैव annual income column, that is the customer's annual income, right? So based on some conditions मुझे इस annual income को categorize करने हैं, and based on some category, based on some conditions or the criteria, right? मैं ऐसे कस्टमर्स को जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा है उनको एक अलग कैटेगरी में रखना चाहता हूँ जहाँ पे उस कस्टमर्स को मैं बोल सकूँ हाई सैलरीड कस्टमर, राइट? ऐसे कस्टमर्स जिनकी एनुअल इनकम 50,000 और 50,000 से ज़्यादा है बट 1 लाख से कम है, ऐसे कस्टमर्स को मैं एवरेज सैलरी इनकम में रख सकता हूँ. ये एक कंडीशंस है, राइट? तीसरा जो कंडीशंस है, ऐसे कस्टमर्स जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, ऐसे कस्टमर्स को हम लो सैलरी कस्टमर में रख सकते हैं. तो ये हमारे कंडीशंस हैं और इस कंडीशंस के बेसिस पे आई रियली नीड अ स्टेटस ऑफ द एवरी कस्टमर्स बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम. तो कैसे करते हैं कंडीशनल कॉलम? व्हेन यू विल गो टू द ऐड कॉलम टैब हियर, यू सी द कंडीशनल कॉलम ओवर हियर. सो जैसे ही आप कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करते हो, एक विंडो पॉपअप होता है आपके सामने जहाँ पे आपके पास जो सबसे फर्स्ट इनपुट होता है न्यू कॉलम नेम. सो यूजर्स हैज टू इनपुट द नेम ऑफ द कॉलम दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट. सो वी वांट द स्टेटस ऑफ द एनुअल इनकम. सो इनकम स्टेटस मैंने कॉलम का नाम दे दिया, राइट? अब वो कॉलम कौन सा है जिस पे आप कंडीशंस लगाना चाहते हो, राइट? तो वो कॉलम है हमारा एनुअल इनकम का कॉलम है. एनुअल इनकम हो गया हमारा, एंड देन ऑपरेटर कम्स. हियर यू हैव टू चूज द राइट ऑपरेटर्स. ये कंडीशंस के हिसाब से, कंडीशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑपरेटर्स चूज करते हो. मेरा जो सबसे फर्स्ट कंडीशंस था वो था ऐसे कस्टमर्स जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो, यानी 1 लाख और उससे ज़्यादा हो, यानी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, एंड दिस इज द वैल्यू. हियर यू हैव टू input the value as per the requirement. So 1 lakh I have just input here, right? Now what is the output? Output means what is the result that you want based on some condition, based on these conditions. I want the status as high salary, high salary, that's it. Now we have two more conditions. So for two more conditions we have to write, we need to add one more clause over here. So if this condition is satisfied, they are going to put those customers under the high salary status. If this condition is not satisfied, what about the next? The next condition is if the annual income is now greater than or equal to but less than 1 lakh, because 1 lakh we have already provided over here. If it is greater than or equal to 50,000, then I'm just going to call those customers as a average salary. You can give any conditions. Now we are left with the third condition. So what is that third condition? If the annual income is less than 50,000, right?
So for that you don't need to add the clauses. The third condition, so the last conditions, which is my third condition, the last condition automatically goes in else conditions, in else options, right? So else we are going to call them as a low salary, low salary. Now when you will hit OK, you will see now our status, income status column has been inserted over here, right? Where you can see the three conditions that we have decided: average salary customers, high salary customers, and low salary customers, right? So you can see the average salary customers have the salary is 90,000, which is greater than or equal to 50,000 but less than 1 lakh, right? So based on the conditions you can create a lot of columns, conditional columns. Here we can also what to say, choose the right data type, right? So this is the text one, so we are going to convert it to the text column, right? So I think you guys are pretty much clear about this conditional columns. So conditions can be anything like customer's age. Based on the age also you can just categorize the customers, whether they are the young customers, whether they are the mid-age customers, or they are the old-age customers, right? So likewise you can create as much conditions as you want, right? So that's all for this today, guys. Keep learning, keep growing. See you in the next video. Thank you so much.